Join your palms, erect your spine, keep your eyes closed and chant Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvisha Vahe. Om Shanti Shanti Shanti. Grab your palms. When it is little warm, attach it to your face and eyeballs. And then take your time to open your eyes. So any doubts from the previous part? Ma'am, three types of bandhas are there, right? Only three. Bandha? Four. Four. First is Jalandhar Bandha, Udyan Bandha, Mooladhar Bandha and तीनों एक साथ महाबंधा. लेकिन इसे आप एज अगर क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो बंधा त्रय बोलते हैं क्योंकि 3 प्रकार के होते हैं. आपका आंसर 3 होना चाहिए. अदरवाइज देयर आर 4 वेरिएशंस. One is Jalandhar Bandha and then Udyan Bandha. And then and Mooladhar Bandha. So shall we move on? Yes. Okay. So we were about to start from here, page number 54, unit 3, Yoga of Health Promotion. 3.1, brief introduction to human body. तो हमें human body के बारे में थोड़ा जान लेना है. Human body क्या है? The human body is composed of interactive systems. Most organs in the body are necessary. However, a few like tonsils are not. There are specific functions for each of the organs in the system, but they cannot operate by themselves. So, a human body is like a machine जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन चलते रहता है. इसीलिए हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है यानी कि बैलेंस्ड स्टेट वो मेंटेन रहता है. Just because of all these organs. And हर एक organ जरूरी नहीं है, like tonsil, appendix, these are not important, but the other, each and every organs, mostly they're important. They all take a part to run our body. So we have our, here we have our human systems. First, we have skeletal system. We have 11 systems, basically. I don't know. Here they have 5, 6, 7, 8, and 9. So here you have 9 system. कुछ system को एक साथ merge किया गया है. That is why it is 9. So let's go with first one, that is skeletal system. So yes, we are entering from outside. Skeletal system is made up of bones, ligaments, and tendons. It shapes the body and protects the organs. The skeletal system works with the muscular system to help the body move.
Marrow, which is soft, fatty tissue that produces red blood cell, many white blood cells, and other immune system cells, is found inside bones. तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो बोन्स यानी कि स्केलेटल सिस्टम बनाता है. नॉट ओनली बोन्स, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर में स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है. एंड स्केलेटल सिस्टम के अंदर थ्री लाइक पार्ट्स है. फर्स्ट इज बोन, और जो बोन को ज्वाइन करता है वो है लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम. ओके, एंड आपको ये पता होगा कि बोन्स आउटसाइड रहता है एंड देन इनसाइड हर एक ऑर्गन रहता है, राइट. तो काइंड ऑफ इट प्रोटेक्ट्स आवर ऑर्गन्स. जैसे एक खांचा टाइप का रहता है, बिल्कुल वैसा ही होता है. बोन्स आउटसाइड रहता है और बिल्कुल उनके बाद ही ऑर्गन्स रहता है. सो अगर आपको कोई अटैक लाइक कुछ एक्सीडेंट हो जाए, आप गिर जाए, फर्स्ट हमारा बोन का ही ऐसा ही देखते हैं कि बोन टूट जाता है, राइट. सो दैट इज हाउ बोन प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स. नॉट ओनली दैट, वी हैव बोन मैरो इनसाइड आवर बोन्स. और बोन मैरो का क्या होता है, जो कि एक सॉफ्ट और फैटी टिश्यू होता है जो कि फैट सेल से बनते हैं. फैट एंड देन इट प्रोड्यूसेस, क्या क्या प्रोड्यूस करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, RBCs, WBCs and other immune system cells. Skeletal system is here. This is what the skeletal system is. If you want to read more, you can always find some other reference like YouTube and everything. But this is very important for a long run. Okay. And then we have muscular system. So when the skeletal system and muscular system works together, then only we can move our body parts. And what is muscular system? The muscular system is made up of tissues that work with the skeletal system to control movement of the body. Some muscles, like the ones in your arms and legs, are voluntary, meaning that you decide when to move them. Other muscles, like ones in your stomach, heart, intestines, and other organs, are involuntary. This means that they are controlled automatically by the nervous system and hormones. You often do not even realize they are at work. The body is made up of 3 types of muscle tissue. So this is about tissue. First, we know about the muscle. What does muscle do? Muscle help us to move. And muscle के दो डिवाइड कर सकते हैं आप, कुछ वॉलंटरी, कुछ इनवॉलंटरी. वॉलंटरी मीन्स वी कैन कंट्रोल देम, इनवॉलंटरी मीन्स वी कैन नॉट कंट्रोल देम. तो जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो है हाथ का मसल है, पैर का है. This, like when we are doing abdominal breathing, we are deciding what to do about with our abdominal muscle. So these are all voluntary muscles. And next we have involuntary muscles, जिन्हें हम लोग अपने मर्जी से काम नहीं करवा सकते. ओके, वो होता है आपका नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, जैसे कि हार्ट and in stomach in the sense the digestive system, and then intestines and other organs. And muscle का जो टिश्यू होता है, कैसे हमारा बॉडी बनता है, फर्स्ट आता है सेल आता है, सेल के बाद बहुत सारे सेल एक जगह होता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू बहुत सारा एक जगह होता है तो आपका बनता है मसल्स. Okay, and these muscle tissues have 3 types. First is skeletal, then smooth, and then cardiac. इसमें भी आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मिलता है. लाइक जो कार्डियक मसल है वो इनवॉलंटरी मसल है. देखिए आपको नीचे पता चलेगा. Each of this has the ability to contract and expand, which allows the body to move and function. Skeletal muscles help the body move. Okay, तो ये है आपका voluntary. Skeletal muscles are voluntary
And then smooth muscles help the body move. Sorry, smooth muscles which are involuntary are located inside organs such as the stomach and intestine. And ये भी involuntary है, जैसे कि पहले ही बोला गया है, that we cannot control our organs. And then we have cardiac muscle, जिसके ऊपर भी हमारा हाथ नहीं रहता है, ये भी involuntary होता है. These 3 type of muscle tissue and 2 kinds of muscle. Are those also muscles? Like those are in those inside. You said involuntary muscles. Those are also muscles. Those we cannot control. Yes, आपका हार्ट कैसे बना हुआ है? उसमें भी सेल्स है ना, उसमें भी टिश्यू है, एंड देन उसमें भी वो मसल का लाइक टाइप अलग है. अगर हम लोग अपने बारे में छोड़ दे, जो हम लोग कभी कभी खा लेते हैं चिकन वगैरह, उसका अगर सोचे तो हम लोग उनका ऑर्गन्स खाते हैं ना, तो वो भी मसल से ही तैयार होता है, लेकिन वो डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स होता है. सेम थिंग है, वैसे ही है जो कि जैसे हार्ट जो है, एंड देन वी हैव द इंटेस्टाइन, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसका एक लंबा पार्ट है जिससे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में शायद समझ में आएगा. Okay. And one more question I want to ask you, like this is something different. Some of my like colleagues, they were asking, why don't you go for gym? Why you go for yoga? So there you can build your muscles. So sometimes I cannot say that this is for me. I like it personally, but they sometimes say that you can build your muscles there when you can go to gym for that. Why are you wasting time on this yoga? So I personally like it, but what should be the answer to them? Like, if you can tell me 1 or 2 lines so that I can say that this is the right thing, or I'm not like, I don't like that, but how to say that? Like, I don't find any way to answer them sometimes. You need to have a perfect answer जो उन्हें समझाए कि why. ऐसा नहीं, आप अपना मर्जी बताएंगे तो उन्हें कैसे समझ में आएगा क्यों नहीं करना है. So if I talk about my personal experience, I have gone to gym also. जिम से वापस आते समय मैं सीढ़ियों से उतर नहीं पाती थी, इतना ज्यादा वो लोग ट्रेन करवाते हैं. एंड देन मतलब वहां पे रिलैक्सेशन का तो कोई चांसेस ही नहीं रहता है. फर्स्ट थिंग, इट्स गुड, इट्स डेफिनेटली गुड. आपको अभी भी सब लोग बोलते हैं, या फिर आप जैसे हम लोग सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अगर आप उनका वर्कआउट रूटीन देखेंगे तो वो लोग वेट ट्रेन भी करते हैं, योगा को भी मर्ज करते हैं, राइट? तो इट इज इम्पोर्टेंट. इट्स नॉट लाइक कि आप उसको पूरा अवॉइड करो, इट्स बैड, बट इट्स अबाउट योर प्रेफरेंस ऑल्सो. बिकॉज आई फील जब मैंने योगा स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि सेम काम हो रहा है, maybe in a slow manner, but काम हो रहा है, and I feel relaxed and happy too. जो कि our lives goal, कि हम लोग खुश रहने के लिए खाते हैं, घूमते हैं. So why not yoga? Why to take stress? Just ask them this little question: why to take stress when you can like earn happiness? I hope they will understand. Thank you. All right, so we will move on to nervous system. One of the most important systems in your body is the nervous system, which is made up of brain, the spinal cord, and nerves. It works as your body's control system. It sends, receives, and processes nerve impulses throughout the body. These nerve impulses tell your muscles and organs what to do and how to respond to the environment. There are 3 parts of your nervous system. So first, what is nervous system? What does it do? Nervous system आपका control करता है. What does it do? It controls our actions, our body, our organs, our glands, and everything. And ये
हमारे सेंसरी ऑर्गन का लाइक वो जो रिसीव करता है वही मतलब सेंसरी ऑर्गन्स को भी नर्वस सिस्टम ही लाइक ड्राइव करता है. इट ड्राइव्स द वे द नर्वस सिस्टम वांट्स इट एंड व्हाट वी गेट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, और जो भी हम लोग देख के या सुन के सेंसरी ऑर्गन से जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. एंड यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है, हमारे बॉडी को ठीक तरीके से चलाने के लिए. एंड दैट इज व्हाट इट सेज दैट कि यहाँ पे थ्री लाइक पार्ट है. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 parts, 3 main organs, you can say brain, the spinal cord and the nerves, जो कि हमारे बॉडी में रहता है. नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड तो हमें पता ही है, एंड द ब्रेन, ये अटैच रहते हैं एक दूसरे के साथ. एंड देन आपका जो भी मैसेज है या इम्पल्सेस है वो लाइक मूव करता है. Send, receives and process. What to do, this also decided by the nervous system. And we have 3 parts of our nervous system. First is the central nervous system, second is the peripheral nervous system, and third is the autonomic nervous system. Central nervous system में क्या है? Brain and spinal cord. Brain and spinal cord is the two like part जो कि central nervous system के अंदर रहता है. ये क्या करता है? It sends out nerve impulses and analyzes from the information from the sense organ. Sense organ से जो भी हमें मिलता है उसको process करता है. Central nervous system, which tells your brain about things you see, hear, smell, taste and feel. Okay. Make it simple. Central nervous system and our sensory organs are related to each other. Okay. Next, we have peripheral nervous system. It includes the craniospinal nerves that branch off from the brain and the spinal cord. So spinal cord, see how it is connected. Central nervous system में brain and spinal cord का function होता है. And next, peripheral nervous system में spinal cord and then craniospinal nerve, जो कि आप बोल सकते हैं 3 part जो है spinal cord, brain and nerve का nerves are here also. Peripheral nervous system, and it carries the nerve impulses from the central nervous system to the muscle and organs. Peripheral nervous system is related to muscles and organs. Central nervous system is related to our sensory organs. Okay. Third, the autonomic nervous system regulates involuntary actions such as heartbeat and digestion. Autonomic, you can understand from its name only. Autonomic, it goes automatically. So autonomic nervous system, जिसमें आपका heartbeat and digestion include रहता है. Like heart is under this system, your intestines are under this system. Okay, तो हर एक सिस्टम का आप इसके नीचे आपको पूरा डिटेल में मिलेगा, वो बहुत ही अच्छा है. बट जो भी आपको यहाँ से नए ये क्या बोलते हैं वो कैब जो भी आपको मिल रहा है, जैसे ये क्रेनियोस्पाइनल नर्व या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट. अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज ऑल दिस. इट्स वेरी गुड अगर आप इसको अभी बहुत ही डिटेल में पढ़ लें. इंटरनेट से आप फोटो निकाल लीजिए, डायग्राम, ठीक है. अगर आपको इसमें आगे जाना है, इफ यू थिंक, तो ये आपको कर लेना चाहिए as soon as possible. So after nervous system, we have endocrine system. Endocrine system is made up of group of glands that produce the body's long-term responsive messengers or hormones. Hormones are chemicals that control body function, such as metabolism, growth, and sexual development. So endocrine system is all about hormones. It
like regulates the hormone, जहां से भी हो, वो थायराइड ग्लैंड से हो या फिर आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से हो, ठीक है, और मे बी फ्रॉम योर लिवर। हर जगह पे जो भी हार्मोनल चेंजेस होता है, एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और हॉर्मोन्स क्या क्या कर सकता है? हॉर्मोन्स आर जनरली कॉल्ड द मैसेंजर ऑफ आवर बॉडी एंड ये हमारे मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। The glands, which include the pituitary gland, thyroid gland, parathyroid glands, adrenal glands, thymus glands, pineal body, pancreas, ovaries, and testes, releases hormones directly into the bloodstream, which transports the hormones to organs and tissues throughout the body. तो ये सारे ग्लैंड इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आता है। okay, pituitary, thyroid and the other glands, और ये सारे ही ग्लैंड्स जो है डक्टलेस होता है, जिससे कि वो क्या होता है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही हार्मोन रिलीज करता है। लाइक एक डक्ट आप एक पाइप के जैसे समझ सकते हैं, जैसे दिस बॉटल, if you think this is an organ and this has this pipe, but these glands doesn't have this pipe, so it directly ब्लड के साथ जो भी हार्मोन होता है वो मिक्स हो जाता है। दिस वाज एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत ही शॉर्ट है, बट यू कैन रीड इट मोर इन डिटेल। नेक्स्ट यू हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम brings oxygen into the body and removes carbon dioxide. It includes nose, trachea, and lungs. When you breathe in, air enters your nose or mouth and goes down a long tube called trachea. The trachea branches into two primary bronchi, which go to the lungs. The primary bronchi branch off into even smaller bronchial tubes or bronchioles. The bronchioles end in alveoli or air sacs. Oxygen follows this path and passes through the wall of the air sac and blood vessels and enter the bloodstream. At the same time, carbon dioxide passes from blood vessels to air sac of the lungs and is exhaled. So respiratory system, every system is very simple. You just need to understand, okay? So respiratory system में सबसे पहले आता है nose, ठीक nose से ही यही से हम लोग का ट्रैकिया जाता है, ठीक है? ट्रैकिया जाता है। ट्रैकिया एक पाइप जैसा होता है, जैसे द फूड पाइप, इसोफेगस दोनों आसपास ही रहते हैं। वो दोनों नीचे जाने के बाद दोनों तरफ डिवाइड होते हैं, उसे कहते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी लंग से अटैच होता है। लंग से अटैच होने के बाद जैसे एक पेड़ का रूट होता है और मे बी ब्रांचेस, सेम ब्रांचेस द ब्रोंकीज हैव, और वो जब छोटे छोटे ब्रांच में आ जाता है उसे ब्रोंक्यूल बोलते हैं। ब्रोंक्यूल के बाद जैसे फ्रूट रहता है ना पेड़ में, एक आपको लाइक छोटा सा डंडा रखेगा और फिर उसमें एक फ्रूट लगा हुआ रहेगा, बिल्कुल सेम है आपका एल्वियली, जो कि यू कैन लाइक फील, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि स्पंज, जैसे स्पंज वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही स्पंज टाइप का होता है एल्वियली, जो कि जब हम लोग नाक से सांस लेते हैं उसे नीचे जाता है, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियली, और वो जो भी ऑक्सीजन आसपास उन्हें मिलता है या कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें सर्व कर लेता है, और बिल्कुल लाइक उल्टे रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है और सीधे रास्ते से ऑक्सीजन अंदर जाता है, एंड देन द ऑक्सीजन आपके ब्लड वेसल्स में और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, ठीक है। दिस इज हाउ यू इनहेल एंड एक्सहेल। योर वन इनहेल एंड वन एक्सहेल includes so many parts, so many organs. Okay. So this is respiratory system,
And then you have circulatory system. The circulatory system, also known as cardiac system, is the transport system of our body. It is made up of group of organs that transport blood throughout the body. The heart pumps blood and the arteries and the veins transport it. Oxygen-rich blood leaves the left side of the heart and enters the biggest artery called the aorta. Underline this thing, biggest artery of our body, aorta. The aorta branches into smaller arteries, which then branch into even smaller vessels and travel all over the body. When blood enters the smallest blood vessels, which are called capillaries, are found in body tissues. It gives nutrients and oxygen to the cells and takes in carbon dioxide, water, and waste. The blood, which no longer contains oxygen and nutrients, goes back to the heart through veins with the carbon dioxide. Veins carry waste products away from cells and brings blood back to the heart, which pump it to the lungs to pick up the oxygen and eliminate waste carbon dioxide. So this is also very simple system. इसका starting कहाँ से होता है? Heart से. ठीक है, हार्ट से सारे आर्टरीज एंड वेन्स लाइक वही उनका क्या बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट वही होता है. हार्ट को आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग देते हैं, तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि आपके हार्ट से होते हुए, आर्टरी से होते हुए, वेन से होते हुए कैपिलरीज तक पहुंचता है. एंड वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन भेजते हैं हर एक सेल्स को, और न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें खाने से मिलता है वो भी भेजते हैं. और जो भी हर एक सेल हमेशा काम कर रहा है, और कोई एक फैक्ट्री अगर काम कर रहा है तो उसमें से तो लाइक धुआं तो निकलेगा. धुआं मीन्स द बाई प्रोडक्ट्स दैट वी डोंट नीड, द वेस्टेज, एंड द वेस्टेज आर यही सर्कुलेटरी सिस्टम से वापस हमारी बॉडी से आउट हो जाता है. जिसे जहां जाना है बहुत ही सिस्टमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड आपके हार्ट की तरफ जाता है, एनी अदर वेस्टेज आपके किडनी की तरफ जाता है, एंड देन इट गोज आउट. So this is how circulatory system works. And here you have a small little point that the biggest artery is aorta, and it is a like multiple choice type question. So next we have digestive system. The digestive system is made up of organs that break down the components of food, protein, vitamins, minerals, carbohydrates, and fats into their simplest form, which the body needs for energy, growth, and repair. After food is chewed and swallowed, it goes down the esophagus and enters the stomach, where it is further broken down by powerful stomach acids. From the stomach, the food travels into small intestine. This is where food is broken down into nutrients that can enter the bloodstream through tiny hair-like projection. The excess food that the body doesn't need or can't digest is turned into waste and eliminated from the body. डाइजेस्टिव सिस्टम आपके मुंह से शुरू होता है, माउथ से खाना खा रहे हैं, खाने के बाद गले में आपका है एसोफेगस, एसोफेगस से होते हुए नीचे आता है, नीचे आने के बाद आपके स्टमक में एसिड के साथ वो मिक्स हो जाता है. स्टमक में एसिड मिक्स हो जाने के बाद वो ब्रेक मतलब छोटा छोटा भी हो जाता है. आपको पता ही है, इतना बड़ा रोटी मुंह में लेते हैं वो तो ब्लड स्ट्रीम या वेसल में जा नहीं सकता है. सो वो ब्रेक डाउन होता है उनका एसिड के हेल्प से, एंड देन वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे खाने में जो न्यूट्रिएंट है वो निकलता है, निकल के हमारे ब्लड स्ट्रीम में ऐड होता है. सो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होता है.
फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इन थर्ड पार्ट से होते हुए and when they like reach the third part, वहीं पे आपका जो न्यूट्रिएंट है वो completely ready होता है to like mix it into the blood streams, वहीं से and then it deliver digestive system के बाद आपका circulatory system काम करता है, the nutrients are sent to the cells. Ma'am, esophagus is pod or what? Esophagus you mentioned. Esophagus is the food pipe जिससे खाना नीचे जाता है. Two pipes are here. एक है esophagus and second is trachea. Trachea for the breathing and breathe out, and esophagus for the food. Okay. और जो भी खाना नहीं डाइजेस्ट हो सकता उसे एलिमिनेट भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लार्ज इंटेस्टाइन एरिया से होते हुए, कोलोन से होते हुए वो बाहर जाता है. ऑलराइट, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आपका है excretory system. The excretory system is responsible for the elimination of waste produced by homeostasis. Homeostasis क्या है? ये जो बैलेंस स्टेट है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपका शुगर नॉर्मल है, इट्स नॉट दैट इजी टू कीप इट नॉर्मल. आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने के लिए हमें हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है. हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से हमें मिलता है. तो जब हर एक ऑर्गन, और देखिए हार्मोन्स कैसे बनता है, फैट से बनता है, प्रोटीन से बनता है हार्मोन्स, ठीक है. और प्रोटीन और फैट हार्मोन्स को कौन दे रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम. सो एवरी सिस्टम इज रिलेटेड और सब मिलके जब काम करते हैं वो होम्योस्टेसिस कहा जाता है. बॉडी का बैलेंस्ड स्टेट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. और जैसे मैंने पहले भी कहा है, फैक्ट्री चल रहा है तो पूरा तो निकलेगा, वैसे ही जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है वही एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं बाहर निकालने के लिए हमारे बॉडी से. और इसमें बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स जो हमारे पूरी बॉडी में है, and then we have the liver and the lungs, liver and lungs and the kidney system. ये सब मिलके हमारे वेस्टेज को बाहर करते हैं. ओके, तो every human has two kidney. Each kidney is made up of 3 sections: renal cortex, renal medulla, and renal pelvis. The blood arrives at the kidney via the renal artery, which splits into many afferent arterioles. These arterioles go to the Bowman's capsules of nephrons, where the waters are taken out of the blood by pressure filtration. Peritubular capillaries also surround the nephron, so substances can't be taken in and out of the blood. The renal cortex is the outer layer of the kidney and the medulla is the inner layer of the kidney. The renal pelvis takes urine away from the kidney via the ureter. Both the ureters lead the urine into the body's only urinary bladder, which expands and sends nerve impulses when full. From there, urine is expelled through the urethra and out of the body. So here we are only talking about the kidney, how the kidney is working. तो आपको पता ही है, दो किडनी रहता है जो कि किडनी बीन्स के शेप में रहता है, किडनी बीन्स के शेप में, इसीलिए उसका नाम किडनी बीन है. एंड देन वही से इसका 3 पार्ट है, ठीक है. और ये तीनों पार्ट क्या है? रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला एंड रेनल पेल्विस. ये तीनों पार्ट हेल्प करता है लाइक फिल्टरेशन में. जैसे कि हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स रहता है जो कि छोटे छोटे सेल्स होता है, उसको आप छन्नी भी बोल सकते हैं, छलनी, जिससे कि फिल्टरेशन होता है. ओके, और
फिल्टरेशन होने के बाद वो आपके रेनल कॉर्टेक्स या फिर आप बोल सकते हैं ये रेनल कॉर्टेक्स से वो पहुंच जाता है आपके ब्लैडर में, एंड व्हेन द ब्लैडर इज फुल तब आपका काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम और वो impulses भेजता है, and then we go to the bathroom and then exhale and then like let it out from our body. Okay, so this is excretory system. New lines, new words, remember them, try to understand them better. So last system we have reproductive system. The reproductive system allows human to produce children. Sperm from the male fertilizes the female's egg or ovum in the fallopian tube. The fertilized egg travels from the fallopian tube to the uterus, where the fetus develops over a period of 9 months. So reproductive system आपका रिप्रोडक्शन करता है, एंड देन इसमें आपका लाइक यूट्रस इंक्लूडेड रहता है, फेलोपियन ट्यूब इंक्लूडेड रहता है, एंड मेनी ऑफ द ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम, जिससे कि हमें रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है. ओके, एंड यू कैन सी द होल थिंग. It's a very simple and interesting thing how reproductive system works. Okay, छोटा छोटा step होता है, and then it develops into a fetus. Fetus जो कि बच्चे के सबसे छोटे फॉर्म को, जो एक सेल जब रहता है तब बोल सकते हैं, उसे fetus बोलते हैं. And then उसके बाद धीरे धीरे it like develops. तो जो भी आप अब तक आपने पढ़ा है उसी का एक छोटा सा एक जगह पे चार्ट के जैसे बना के दिया गया है कि सिस्टम, ऑर्गन्स और उनके फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम में बोन्स एंड मसल्स होता है. प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट. सो बोन्स में 3 पार्ट है, बोन्स है, टेंडन्स है एंड लिगामेंट्स है, ये भी आपको जानना है. नर्वस सिस्टम में ब्रेन, नर्व, स्किन, आई, टंग, नोज, ईयर एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सब इंक्लूडेड रहता है. वेन्स इंक्लूडेड रहता है. कंट्रोल, ये क्या करता है कि कंट्रोल ओवर बॉडीली फंक्शंस एंड रिएक्ट्स टू द स्टिमुली. बॉडी फंक्शन के ऊपर इसका कंट्रोल रहता है, और जो भी हमें सेंस ऑर्गन से मैसेज रिसीव होता है उसके अगेंस्ट काम करता है. एंडोक्रीन में तो सिर्फ इतने सारे ग्लैंड नहीं, 9 ग्लैंड्स है जो कि आपको वहां पे मिला है. वो 9 ग्लैंड्स आप याद रखें, बट दिस आर द मीन्स few very important glands like the pituitary gland, adrenal gland and thyroid gland. Production of hormones and body regulation ये करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स है, ब्रोंकी है, फेरिंक्स है, ट्रैकिया है, bronchial tubes, nasal passage and diaphragm. ये सब कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है, और ये क्या करता है, ब्रीथ्स इन ऑक्सीजन एंड एक्सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. तो ट्रैकिया तो आपको पता है, फेरिंक्स जो है वो ट्रैकिया थोड़ा नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक यहाँ से लाइक नाक के पीछे से जो जाता है उसे पहले फेरिंक्स कहा जाता है, एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड लैरिंक्स. तो ये सेम ही है, एक ही पार्ट का अलग अलग नाम है. ओके, एंड दिस इज व्हाट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज. यू हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, blood vessel, heart and lymph. This makes the circulatory system. इनका काम होता है न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना, और जो भी बाई प्रोडक्ट आता है उसे बाहर लाइक उसको भी जहां से बाहर निकल सकता है वहां तक पहुंचाना. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका फूड को ब्रेक डाउन और एब्जॉर्ब करता है, उसे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है. इसमें स्टमक, लिवर, टंग, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन एंड एसोफेगस इंक्लूडेड रहता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज, ब्लैडर, यूरेटर्स एंड स्किन.
controls water and salt balance. Reproductive system में for females you have uterus or the womb, fallopian tube and ovaries, and for males the testicles or the testes, epididymis and vas deferens. Ye allows human to produce children. This is what reproductive system does. 9 systems you have all together. And is there any doubt? I would request you कि आप ये पार्ट बहुत ही अच्छे से पढ़े बिकॉज इसी में हमें काम करना है, राइट? हमें अगर आप थेरेप्यूटिक योगा करें तो यस आपको ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो यू नीड टू नो व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, ठीक है? तो आप इसका अच्छे से पढ़े और इसको समझने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छे अच्छे YouTube में वीडियो मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकता है, बहुत ही सिंपली एंड एंटरटेनिंग वे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो एनी डाउट्स फ्रॉम एनीवन? When someone have some digestive issues, at that time, if that person is asking which one, like which yoga would help, so we will work according to that, like his or her problem, like digestive problem, we will work on that way. यस ऑफ कोर्स, नहीं तो ऐसे तो कोई योगा करने आएगा नहीं। डॉक्टर बोलेगा कि आपको प्रॉब्लम है, योगा करो, तभी वो आएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन है तो इट्स गुड, अदरवाइज तो आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे कि अगर किसी को बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, बीमारियों का अंत नहीं है, तो इसीलिए आपको बहुत ही समझदारी के साथ उनको प्रैक्टिस करवाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हुए देन प्रैक्टिस, और always include the other practices also. Understand the importance of Shatakriya and the Stula and Sukshma Vyam, ठीक है? ये सारे प्रैक्टिस हेल्प कर सकता है। और ऑब्वियसली कोई भी प्रैक्टिस करवाने से पहले आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन जानना है, उनको क्या प्रॉब्लम है, जो आप सजेस्ट कर रहे हैं उसमें कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, देन one can practice properly. Okay, any more doubts? All right, so we will move on to 3.2. We have much lesser time, but we can do this. So 3.2 is meanings and means of health promotion and role of yoga in health promotion. Yoga health promotion में कैसे help कर सकता है? According to World Health Organization or WHO, health is defined as a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. So when you are fit with these 4 points, then only you will be called healthy. Physically healthy होना है, mentally आपको खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम, that is, you know, you asked that question about gym and yoga. You can relate to this. You are doing gym like I was going to the gym for a month. And then when I was coming back, I only used to like sit down, khana kha ke so jana hai. But you have other like responsibilities. When you do not perform them, you feel bad that it's my duty, we are not doing it. How would you be happy? How would you be mentally happy, mentally fit? So you need to be mentally fit also. Social, you need to be like जैसे हम कैसे आउटसाइड वर्ल्ड में हमारा एटीट्यूड या फिर खुद को प्रेजेंट करते हैं, that is also important. And then spiritual well-being, you should have the knowledge of the reality
that is what spirituality is, then you can be healthy. According to the definition of health, if a person wants to maintain real health, he must practice yoga. The practice of Ashtanga Yoga is a complete practice to attain true health. Through the practice of Yama, a person can express his honest qualities which characterize his character. Niyama teach how to build yourself in a social way. So through fasting and following the rules, a person can create a healthy and beautiful environment and mental atmosphere. This too works on your mental body, Yama and Niyama. Then you have Asana. Asana practice eliminates anatomical defects, stimulates the system and glands, which leads to good health. ये जो भी हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा है, 9 systems, these can be regulated by the asana practice. Pranayama is the life force of the body, increases oxygen holding capacity in the body, which enables the body to resist disease. Okay. तो कैसे होता है? ऑक्सीजन हर एक सेल में, क्योंकि एवरीथिंग इज इनबिल्ट इनसाइड अस, ठीक है? इट इज अस हु डू नॉट टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ. दैट इज व्हाई ऑल द डिजीजेस आर like growing so fast. So what we have to do when we have like complete oxygen or enough oxygen in our body, every cell is nourished. When every cell is nourished, they can form a better muscle. They can form a better organ. That is how you stay healthy. That is how pranayama helps you. Withdrawal habits keep the person's mind away from worldly objects, as a result of which the subject can live happily without addiction. So this is talking about pratyahar. Pratyahar mein we withdraw ourselves. So when we withdraw from something, जैसे कि अगर you can say smoking, कोई smoke करता है, तो अगर आप उससे खुद को withdraw कर लेते हैं, you will automatically be healthy. ऐसे ही हमारे और भी एडिक्शन एडिक्शन होते हैं, बहुत ही लाइक सिंपल बोलते हैं कि किसी को स्वीट खाने का एडिक्शन रहता है, मीठा उनको चाहिए खाने में, तो व्हेन यू विथड्रॉ फ्रॉम इट यू विल गेट बेटर. एवरी एडिक्शन इज लाइक हार्मफुल फॉर अस एंड प्रत्याहार हेल्प्स अस टू स्टे अवे फ्रॉम द एडिक्शन. Practicing meditation increases concentration. As a result of this increase in concentration, the person notices improvement in any task. Therefore, a person can easily attain good health as a result of yoga practice only through the practice of Ashtanga Yoga. So when you can concentrate in something, तो आप उसके थ्रू आप बहुत कोई भी एक टॉपिक को अगर आप उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं with your calm mind, you can see every point, every side of it. Then it is easily understandable for you. Like in a situation, आपको अगर आप उसके बारे में बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, कोई भी डिस्टरबेंस के बिना अगर आप सोचे कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं, लाइक एनीथिंग, अगर आप कल एक योगा स्टूडियो खोलना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ खोलना चाहिए, वहां पे लोग है कि नहीं, एंड मेनी मोर पॉइंट्स, राइट? बट यू नीड द क्लियरिटी ऑफ योर माइंड कि व्हाट डू यू वांट and is it beneficial for you? When you practice concentration or meditation, then you can achieve this state. And यही बोल रहे हैं कि इसी सिर्फ अष्टांग योग को फॉलो करने से ही a person can stay healthy. However, the practice of other principles of yoga such as 6 karma, mudra, bandha, change of diet, etc. is equally effective in maintaining a person's health. So it depends कि आपको किसको क्या चीज मतलब सजेस्ट करना चाहिए.
जैसे अगर कोई भी हो जो कि बहुत ही ज्यादा वीक हो, तो आप उनसे नहीं करवा सकते हैं ना हैंड बॉडी का मूवमेंट। तो फर्स्ट आपको उन्हें षटकर्मा, बैठ के मुद्रा एंड बंधा, इसी के प्रैक्टिस से, अगर कोई थायराइड वाला कोई आपके पास आए जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है एंड ही और शी इज वेरी हेवी, शी कैन नॉट मूव हर बॉडी, तो आप जैसे कि बोला गया है, आसन क्या है जो कि आपको स्थिरता और कंफर्ट दे। आप उनके लिए प्रैक्टिस डिस्कम्फर्टेबल नहीं बना सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू डू अदर थिंग्स, जैसे कि उद्यान बंधा जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड्स को बेटर फंक्शन करने में हेल्प करता है। सो इट डिपेंड्स के कौन आपके सामने आ रहा है, उनको क्या चाहिए, दैट इज हाउ you like suggest them what to do. Okay, so here we will stop and we will start from 3.3 from the next day. So I hope the topic is clear. If any doubt, you can ask. This is something else. One of my friend is addicted to video games. Like he always uh, in that. Like whenever he gets time, and he was asking like, is there any pranayam that will help him to get rid out of that? So he always on with his phone. Whenever we are talking, also he's playing. So we all are saying it's harmful for you. So he was asking which will help to him, like which pranayam. So I was thinking to ask you, is there anything what I can suggest him? Yes, definitely. You just ask him to lie down in Shavasana and concentrate on his breath. Sit in Padmasana or Sukhasana, however you can sit, or in a chair, and just take a few time. जैसे आपको मेडिटेशन के बारे में आपके बुक में ही है कैसे स्टार्ट करना है, वैसे ही 2 मिनट से होते हुए आप उनको बिठाइए, 2 मिनट करके बैठे, तो उनको बेसिकली व्हाट वी वांट, हम हमारे माइंड को भटकाना चाहते हैं फ्रॉम दिस प्रैक्टिस टू अदर प्रैक्टिस, तो उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। लाइक अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है कि जस्ट उनको भी सिर्फ अपने माइंड को ट्रेन करना है। वो सिर्फ सच से भाग रहे हैं, that it is harmful, is just not accepting the truth. Nothing else is the problem. Whenever he like accepts it, it will get better. This should just divert his mind from this to something else. All right. I hope this will help. Okay. So I think there is no more question from anyone. We will then conclude our session. Okay. So join your palms. Keep your spine erected. Close your eyes and chant. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukh Bhag Bhave. Om Shanti, Shanti, Shanti. Grab your palms. Then please lift your arm, attach it to your face and unfold. And then gently open your eyes. Thank you. So see you tomorrow. Thank you.